what topics which we need to study for aptitude section. Aptitude section and the English section, these are the two most easiest sections, among which not everything is necessary for our IMUCT or for our sponsorship examination. To focus on the important topics जहां से हर साल questions आते हैं. Hello everyone, I hope all of you are doing well. This is your Sailor Girl Prerona Ghosh. So as I have promised कि मैं एक complete dedicated series रखूंगी जिस पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात करेंगे IMUCT के different chapters, I mean जो important chapters है हर एक subject से. तो this is the second video on IMUCT series that कि पहले दिन में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि इंग्लिश के लिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. Today let us discuss about what topics which we need to study for aptitude section in case of your IMUCT, also along with your sponsorship examinations. Now one thing I would like to make pretty clear is that apart from your IMUCT, those whoever is preparing for your sponsorship examinations, trust me, you will get a huge number of questions from your aptitude section as well. So you need to work on both of them, right? ऐसा नहीं कि मैं aptitude section छोड़ के चली जा सकती हूँ. And IMUCT में last year I'm literally telling you my personal experience which I have got to know from my students is that, ma'am, the aptitude section and the English section, these are the two most easiest sections on which we can show our skills. तुम अपना स्किल्स दिखा सकते हो. जितना तुम एप्टीट्यूड ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा एप्टीट्यूड के आंसर सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि एप्टीट्यूड में अगर ये इंडीबिक्स अगर ऐसे साइट पे तुम जाके एप्टीट्यूड के लिस्ट देखते हो तो वहां पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं which among which not everything is necessary for our IMUCT or for our sponsorship examinations. Now, so what we need to do? We need to focus. We need to focus on the important topics जहां से हर साल questions आते हैं. So starting with the first topic will be your probability. Probability एक ऐसा topic है जिसमें से हर साल अच्छे खासे questions आते हैं IMUCT में भी and even in your sponsorship examination. So aptitude section अगर तुम कर रहे हो, you cannot have the audacity to miss out on probability. After probability we have on the list is profit and loss. Profit and loss से भी बहुत basic questions आते हैं पर important questions आते हैं. So it's an important topic that you cannot just say अरे छोड़ो बहुत आसान है, but ऐसा नहीं होता है. You should have at least some practice. You should practice a few questions. Next on the list we have is about height and distance. Height and distance के भी questions, as I have already said, simple questions आते हैं, basic questions आते हैं, पर अच्छे questions आते हैं. Like ऐसा नहीं कि बिल्कुल practice ना करके जाके भी कोई इंसान कर सकता है. तो अगर तुम्हारा basic उतना strong नहीं है, I suggest you that you start practice questions on height and distance from day one itself. Because as I'm multiple times as I'm saying this, that aptitude is a scoring part. इससे तुम्हारा rank में काफी enhancement आ सकता है. Next, I will be mentioning about another one topic that is interest. That means your simple interest and your compound interest. Again, basic questions आते हैं, बहुत hard कुछ नहीं, थोड़ा बहुत practice and it will be done. After that, we also get to see questions from permutation and combination. ये +1 +2 के जिसके knowledge थोड़े बहुत ठीक ठाक basic knowledge ठीक है, तो permutation and combination is a very very important topic and it's a quite easy one. बहुत आसानी से questions इसके बन जाते हैं. Next, speed, time, distance, work. ये 4 टॉपिक्स से क्वेश्चंस हर बार IMUCT में भी और हर स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशंस के जो CBT होता है या फिर जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उसमें भी तुम्हें इन टॉपिक से प्रोबेबिलिटी का मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें 99% चांस है कि तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे एप्टीट्यूड सेक्शन के अंदर. सो दीज आर द फ्यू टॉपिक्स दैट यू कैन नॉट मिस आउट if you are preparing for IMUCT 2025 and also even in case of your sponsorship. So this was the second. Also one more topic I forgot to mention about is your mensuration. Mensuration के भी basic questions देख लेना. Mensuration 2D and 3D both includes. इसके भी basic questions थोड़ा बहुत कर लेना. अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, द बेस्ट वे आई वुड सजेस्ट इन केस ऑफ योर स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो.
प्रीवियस ईयर में कैसे पूछा गया था, हर एक बैच में उनका थोड़ा बहुत पैटर्न का थोड़ा सिमिलरिटी रहता है, थोड़ा चेंज होता है, तो क्वेश्चंस को टैली करो कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी क्वेश्चंस को लगाओ। इवन चाहे तुम चाहो तो उसी क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लो, सेम एग्जांपल प्रैक्टिस करो, बट ट्राई टू कीप अप विद द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आर गेटिंग. So this was our second video on what you should prepare and how to prepare for your IMUcet 2025 and even in case of your sponsorship. So if you like this video and if you want a complete series on the same, do let me know in the comment section. And if you are someone who is still struggling to कि कैसे अभी sponsorship का भी preparation करे भाई, कैसे IMUcet का preparation करे, अभी तो बस 2 ही subject के बारे में बात है, अभी तो पता नहीं कितने और subjects हैं और इतना सारा topic, कैसे सब कुछ manage होगा, तो IMUmate has got your back. तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो गिवन डिटेल्स नीचे तुमको दिख रहा है, फोन नंबर या फिर हमारे टेलीग्राम के थ्रू या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, contact us, reach out to us, okay, and we will help you out, and the batches are at the minimal cost. अभी दिवाली ऑफर भी चल रहा है, so don't be late, book your seats now, and for more such updates stay tuned, don't forget to hit the subscribe button. Thank you.